Hello everyone. Very good morning to all of you. Yes. Good morning Mitali and others, those who have joined. Very good morning Sushant. So my today's topic of discussion is again one of the most important topic from Indian Polity and Constitution, that is fundamental rights. So fundamental rights को start करिए पूर्व before starting today's topic of discussion, these are some important information and about the ongoing batches in Unacademy platform. These are our plus features. You can learn from your favorite educator. There will be complete exam preparation, regular doubt clearing session, weekly pre-mock test, free test series, and exhaustive coverage of the syllabus. This is the difference between the free and plus session in Unacademy platform. In free, you will get limited syllabus coverage, limited practice test, and limited notes. But in plus, you will get complete syllabus coverage, unlimited practice test, unlimited notes. These are our special class features, which are completely free of cost. You can download the Unacademy app and attend all our special classes, which are going to be completely interactive sessions. There will be polling for the learners. You will never miss a class because you will get the notification in time. You can download the lecture notes and you can access to the portal anywhere and any time to enjoy uninterrupted learning. So UDAN, it is a resolution 2022 special batch for OSSC examination. Foundation course for OCS prelims Pratigya. Sadhana, it is a comprehensive course for teaching exams. Okay. So let's start our today's topic of discussion on the fundamental rights. Fundamental rights ko ame purporu in different ways I have discussed, in different sessions I have discussed. So basically today I will discuss what is a right and what are the most important characteristics or features of the fundamental rights in India. So what is a right? Right कहले हमें first कौन पूछे? Rights are simply the legal, social or ethical principles of freedom. Right is all about freedom. Now again question, why is freedom important? Again question is, why is freedom important? Freedom important kahin kyapai? Because as a human being, freedom is important for us. Right to freedom, this is simply a natural right. When you have a life, you should have freedom. So that is violation of the freedom. So rights are all about your freedoms. That may be related to freedom of speech and expression, that may be related to right to life or any other form of the rights that I will discuss right now. There are different types of rights. The most important one is the natural right. Natural right hame kahako koche, by virtue of nature the right that we have received is known as a natural right. So they are simply universal rights. Natural rights, they are universal rights. For example mu kahibi right to life. Right to life हमको nature देची, it is ये हमको मिलची through nature. So no one can take away our right to life. So right to life is a natural right. Legal rights कहले हमें कौन बोलुचे ना, the rights which are conferred to us by virtue of laws, society custom, law, statute, या द्वारा हमको जो rights मिले तक हमें legal rights बोले को. For example, right to vote, it is a legal right. Then what is the historical background of fundamental rights in India? So 1925 रे Indian National Congress first time पे finalize कला कि will adopt a declaration of rights. Then 1927 ने there was a session, Madras session, Indian National Congress ra. In this Indian National Congress again demanded to incorporate Declaration of Fundamental Rights in the future constitutional framework. 1931 ने Indian National Congress ra Karachi session hala. In Karachi session we adopted a detailed program of fundamental rights. 1931 पर the most important activity देखिवा India रे, then that is the Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 जदियो ये पास होइतिला, in this there is no space for the fundamental rights. एतरे fundamental rights related कौन सी प्रकार discussion हेला नहीं. Mithali, if it is not clearly visible to you, then it is a network issue from your side. Just resolution को बढ़ा YouTube रे first, and second check your internet connection. If you don't enjoy a good speed, internet speed, ताले problem ही पर. Otherwise it is working from my side, right? So 1935 Rasala Government of India Act, which was completely silent about fundamental rights. That is why it disappointed the other Indian leaders. Then 1945 रे India रे गोटे committee create करागला जहाँ नाथला SAPRU committee. SAPRU committee 1945 रे it stressed for the need of a written code of fundamental rights, and the Constituent Assembly raised a forceful demand for the inclusion of human rights in the Constitution itself. Finally, जेतरा हमर Constitution
formation hela jeta amar constitution formation hela the framers of the constitution they derived inspiration from the USA United States of America ru bill of rights ru inspire heiki ame India रे fundamental rights को include कले कोट include कले ना in the constitution को part रे in part 3 of the Indian constitution आर्टिकल कहते हैं ना फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 या भीतर हमें फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करें एंड फाइनली वी आर एंजॉयिंग फंडामेंटल राइट्स सो ओरिजिनली देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम right against exploitation right to freedom of religion cultural and educational rights right to property right to constitutional remedies right to property it was deleted through 44th constitutional amendment act 1978 now right to property is there under article 300A in part 12 of the constitution so presently we have only 6 fundamental rights clear satata fundamental right originally thila but right now there are 6 fundamental rights because right to property article 31 जो था जी that was deleted through 44th constitutional amendment act मुझे पारले समझते ना अन्य मन को डाउट अछि GBD is saying sir I am new in your video so how to prepare for OS examination there is separate session on how to prepare you can go through the strategy session this is a session where I supposed to discuss about some important concepts of Indian polity and constitution so I will advise just go through the strategy session how to prepare for OPSC examination. It is available in Unacademy app. I have taken one class in as a special class and in YouTube also it is available. Just go through it. What are the book list and how to prepare for it. Now I will discuss about what are the features of the fundamental right. Fundamental right of feature most important. So जो fundamental rights हमें देखुचे that is available both to the Indian citizens as well as to the foreigners. एठी गोटे 5 नंबर ये 5टा नंबर मन रखिबो आर्टिकल 15 16 19 29 30 कोन कहले एठी आर्टिकल 15 16 19 29 30 it is given to only to the Indian citizen ये केवल Indian citizen मान को दिया जाय छी otherwise all other articles বা all other fundamental rights that is available both to Indian citizen as well as to the foreigners those who are residing in India. So 15 16 19 29 30 मन रखिबे बहुत important available only to the Indian citizens. Then the next feature of the fundamental right is the state can impose restriction on fundamental right. These fundamental rights are not absolute, they are qualified. So there is a difference between these two terms absolute and qualified. Absolute कहला में कोन बुझे एब्सोल्यूट अर्थ होची कोनसी प्रकार एक्सेप्शन नाही फॉर एग्जांपल मु कहली कि प्रत्येक दिन 10 टा रे मु YouTube रे गोटे क्लास नेबे लेट्स से मोर स्टेटमेंट को हम एब्सोल्यूट कर दवा ताले प्रत्येक दिन 10 टा रे मु गोटे क्लास न पय बाध्य इंटरनेट कनेक्शन थाउ न थाउ मोर देह ठीक थाउ न थाउ मु 10 टा रे प्रत्येक दिन गोटे क्लास न पय बाउंड बट क्वालिफाइड कहला में कोन एठी किछि एक्सेप्शन हम लिखि दो एक्सेप्शन एठी कोन लिखि परिबा कि लेट्स से मु कभी सैटरडे संडे मु क्लास नेबिनी इंटरनेट कनेक्शन नथिले मु क्लास नेबिनी बा मोर देह खराब थिले मु क्लास नेबिनी दीज आर एक्सेप्शन देन माय स्टेटमेंट विल बी क्वालिफाइड इन द सेम वे व्हेन वी डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट माने एब्सोल्यूट नहंती रादर ये फंडामेंटल राइट माने कोन ना एमन होचंदी क्वालिफाइड माने देयर आर सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस व्हिच आर इम्पोज्ड अपॉन देम. Next one is Article 19. It can be suspended only when emergency is declared on the ground of war. मन रखिबे emergency Article 352 अनुसार तीनटा ग्राउंड रे डिक्लेयर हे पारे फर्स्ट ला वार सेकंड ला एक्सटर्नल एग्रेशन थर्ड इज द आर्म्ड रिबेलियन ये तीनटा ग्राउंड रे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हे पारिबो जदी फर्स्ट और सेकंड ग्राउंड इट मींस वार और एक्सटर्नल ग्राउंड रे emergency declare हुए then article 19 is automatically suspended but if armed rebellion ground रे declare हुए then article 19 is not suspended. Article 19 is all about freedom of speech and expression हमें पढ़िबा don't worry. Then fundamental rights are against the arbitrary action of the state. Arbitrary action कहला हम कोन बुझुचे मन इच्छा काम कहार ना state रो definition मध्ये हम वर्तमान पढ़िबा. So most of the fundamental rights they are available against the arbitrary action of the state. So fundamental rights are basically negative in character. The fundamental right को पढ़िबे ये लिखिबो कि the state shall not do like this, the state shall not do like that. So that is why it is basically negative in character. Some of the fundamental rights that is positive in character. The next is
Article 20 and 21, apart from this all other articles they can be suspended during the national emergency. So 20 and 21 article, they are only the absolute articles or absolute fundamental rights in the Constitution of India. Others are qualified rights, but these two are absolute. Now, who is the defender and guardian of the fundamental rights? Then this is the Supreme Court is the defender and the guardian of the fundamental rights. So the aggrieved person can directly move to the Supreme Court. India रे गोटे प्रोसेस अछि जाको प्रोसेस ऑफ अपील बोली कहै जाय कोर्ट रे केस करिया पई. सो प्रथम हमें जवा लोअर कोर्ट को, लोअर कोर्ट रे इफ यू आर डिससैटिस्फाइड देन यू कैन मूव टू हाई कोर्ट रे डिससैटिस्फाइड यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज द अप्रोच. ए अप्रोच रे हमें जवा आको हमें को दिस इज नोन एज द वे ऑफ अपील. बट जदि फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन हुए ताहले प्रोसेस ऑफ अपील रे न जाय कि डायरेक्टली जने सुप्रीम कोर्ट जाय परिबो बा डायरेक्टली जने हाई कोर्ट जाय परिबो. हाई सुप्रीम कोर्ट जीव को अनुसार ना आर्टिकल 32 अनुसार जने सुप्रीम कोर्ट जाय पारे एवं आर्टिकल 226 अनुसार जने हाई कोर्ट जाय पारे. बुझेला. द नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट. एमाने परमानेंट नुहंती, रादर फंडामेंटल राइट्स आर टेम्पररी और दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड. या पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर सारछि. Then most of the fundamental rights are self executory and some others एमान को एनफोर्स करिया पई पार्लियामेंट को किछि लॉ फॉर्मुलेशन करिया पई पड़े. ए लॉ के फॉर्मुलेट करि परिबो ना ओनली पार्लियामेंट कैन फॉर्मुलेट लॉज. ओनली पार्लियामेंट कैन फॉर्मुलेट लॉज. स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्मुलेट लॉज. So this is all about the basic characteristics of fundamental rights. तापर हम डिस्कस करबा आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 12 स्टेट रो डेफिनेशन को डिस्क्राइब करूछ. सो स्टेट कहले हम कोन कोन बुझुछे. गवर्नमेंट रो तीनटा ब्रांच थाय हम समस्त जानिछे, दैट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. सो लेजिस्लेचर रो फंक्शन टू फॉर्मुलेट लॉज, एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट इट, जुडिशियरी टू स्क्रूटनाइज इट. ये कहूँ इंडिया फेडरल पॉलिटी अच्छी. यूनियन गवर्नमेंट हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी एंड स्टेट गवर्नमेंट अच्छी. दीटा गवर्नमेंट जो था हम फेडरल पॉलिटी बोली कहू. फेडरल पॉलिटी को केतला दीटा गवर्नमेंट थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा लेजिस्लेटिव ब्रांच अच्छी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव ब्रांच अच्छी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जुडिशियरी बोथ स्टेट आउ यूनियन पई समान, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ताले स्टेट रा डेफिनेशन में के आसुची ना द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एमान आछंती. जेते लोकल अथॉरिटी अच्छी लाइक म्युनिसिपैलिटी, पंचायत राज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एमान आछंती, प्लस अदर स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक LIC, ONGC एमान मध्ये आछंती. नाउ द क्वेश्चन इज गोटे प्राइवेट बॉडी और प्राइवेट एजेंसी ये आर्टिकल 12 अंडर आसी परिबो ना आसी परिबो नाही. जदि ये प्राइवेट बॉडी कोनोसी गवर्नमेंट फंक्शन को बा पब्लिक फंक्शन को डिस्चार्ज करूची देन यस ये आर्टिकल 12 रो डेफिनेशन अंडर बा स्टेट रो डेफिनेशन अंडर आसीबो. नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तमान में कोर्ट को एथरे इंक्लूड करि परिबो नै स्टेट रो डेफिनेशन अंडर नै. सो कोर्ट रो दि प्रकार काम थाए. गोटेला एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी आ गोटेला जुडिशियल फंक्शन. जुडिशियल फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. जेता जुडिशियल फंक्शन डिस्चार्ज करे इट डजंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बट व्हेन इट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इट कम्स अंडर द फंक्शन ऑफ स्टेट. ये स्टेट रो डेफिनेशन अंडर आसुची. जुडिशियल फंक्शन ने आसु नाही मन रखिबे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ने ये आसुची. Then the next one is Article 13. Article 13 कहूची कोन ना, it defines a law. Then ये कहूची कि if a law is inconsistent with or in derogation of the fundamental right ताहले कोन हवा दरकार, ये से कथा कहूची. So प्रथम हमें देखिबा what is a law. ये law कहले का इंक्लूड करूची. फर्स्ट कहूची कि द परमानेंट लॉज व्हिच आर एनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट बा स्टेट लेजिस्लेचर जो परमानेंट लॉ फॉर्मुलेशन करिसेंती, बा जो टेम्पररी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस के कर परिबे ना गवर्नर एंड प्रेसिडेंट कर परिबे. जदि कोनोसी समय स्टेट लेजिस्लेचर बा लोकसभा ये सेशन ने नहांती, देन द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू फॉर्मुलेट ऑर्डिनेंस. देन द स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लाइक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन जाको हम कहू executive legislation. Then laws, rules, regulation, bylaws, notification, ये सब notification जेमती OPSC, UPSC रा notification. So bylaw, let's say हमें गोटे company formation कले, गोटे organization formation कले, तार internal rule, regulation, structure कौन होगा दरकार, से सब bylaw. ये सब मध्यम law रा definition under आसंती. या व्यतीत law रा दीटा source था, गोटे ला legislative source, आ गोटे ला non legislative source.
So non legislative source किए ना the custom or the tradition or the tradition को हमें नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स कहूचे ये कहूचे ये भी कस्टम बा ट्रेडिशन भी लॉ रो डेफिनेशन अंडर रे आसुची नाउ आर्टिकल 13 कहूचे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दे आर नॉट लॉ सो दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ताको कोर्ट रे हमें चैलेंज कर परिबानी बट सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस 1973 होल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो if fundamental right, if it is a part of the basic structure of the Indian Constitution, then they cannot violate it. This is about Article 13. Article 13 pare, the next one we have is Article 14. So Article 14 discusses about two facts. One is equality before law and the second one is the equal protection of the law. Kon kahili? Equality before law and equal protection of the law. So equality before law kon equality before law ro artha hochi all are equal in the eyes of law, all are equal in the eyes of the law. So on the basis of gender, on the basis of race, religion, caste samaste ain agre saman. Tale question hochi how can we give reservation to women on the basis of gender, how can we give reservation to SC and ST on the basis of caste or on the basis of they are not in the mainstream, how can we give reservation to the EWS if all are equal. So एथिपाई आउ गोटे कॉन्सेप्ट एटी आसुची जहा कोन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ रो अर्थ होची ऑल आर एटी तो हम देखिले ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ. एटी देखिले हम ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ. एटी देखियो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रे कि those who are in the same circumstance they should be treated likely, those who are not in the same circumstance or different circumstance they should be treated differently. ए कथा कहूची फॉर एग्जांपल मु कहली कि गोटे गेम हबो गोटे हम गोटे मैच करबा क्रिकेट मैच जो थरे अनएकाडेमी स्टूडेंट माने गोटे साइड रहइबे एंड आउ गोटे साइड रे आईपीएल टीम रहइबो इंडिया आईपीएल टीम कोन गोटे आईपीएल टीम रहइबो त माने ये गेम को न करबा सहित समान बिकॉज़ हमें जानि छी कि के जितबो के हारिबो. एटे कहूची यदि गेम होची मैच होची ई स्टूडेंट मानक भीतर हो आईपीएल टीम मानक भीतर हो. सो दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. जो माने सेम सर्कमस्टेंस रे अछंती से मानकू सेम टाइप रो ट्रीटमेंट मिलिबो, जो माने डिफरेंट सर्कमस्टेंस रे अछंती से मानकू डिफरेंट टाइप रो ट्रीटमेंट मिलिबो. सो इक्वालिटी बिफोर द लॉ कोन कहूची ना द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, the equal subjection of all persons to the ordinary law of the land administered by the ordinary law of court. No person which is rich or poor, high, low official, non-official, they are not above the law. So samaste all are the law is supreme, law is above all. So एको पढ़िबे जोटा पढ़िले आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 गोटे कांसेप्ट रो आसी छि जहा को रूल ऑफ लॉ बोली कहै जाय. रूल ऑफ लॉ इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर एवी डेसी. ये तीनटा पॉइंट ऊपर डिस्कस करछि. फर्स्ट कोच एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, कौन से आर्बिट्ररी पावर नहीं, देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इट मींस लॉ इज द किंग, लॉ इज अबव ऑल, दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. देन देयर इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, या पर हम डिस्कस कली. थर्ड पॉइंट कोच कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, रादर इट इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. बट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स. कॉन्स्टिट्यूशन अलगा लॉ माने क्रिएट हेचंती. कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को क्रिएट करूची. कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एमान को तार अथॉरिटी बा पावर दोची. सो इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द प्रोडक्ट. हैला. सो एटा मन रखिबे कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल रादर देन इट इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. सो दैट इज व्हाई रूल ऑफ लॉ को इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे जदि हम देखिबा फर्स्ट और सेकंड समान, थर्ड पॉइंट रे हम एठी नै जकोना इंडिविजुअल लिबर्टी इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे हम एठी नै जे. There are certain exceptions to this Article 14. The first one is Article 361. Here goes President and Governor. They are not answerable to any court of law for exercising their executive power. The executive power of function discharge kariya pai they are not answerable in any court of law. So emanok against रे कोनोसी criminal proceeding create करा जाय परिबो नाही. Now what about civil proceeding? Civil proceeding हे परिबो but 2 मास रा notice period देखि minimum. Then Article 361A ये कहूची यदि पार्लियामेंट बा स्टेट लेजिस्लेचर रे जहाँ भी प्रोसीडिंग होची तार ट्रू पब्लिकेशन ट्रू रिपोर्ट को के पब्लिश करूची देन ताहले एमान को अरेस्ट करा जिवो नाही बा ताका अगेंस्ट रे कोनोसी कोर्ट प्रोसीडिंग क्रिएट करा जिवो नाही. आर्टिकल 361. नेक्स्ट इज आर्टिकल 105. ये कहूची एमपी मानक विरुद्ध रे कोनोसी प्रकार प्रोसीडिंग क्रिएट करा जाय परिबो नाही. कोन पई ना फॉर एनीथिंग for any vote given by them in the parliament बा समान करथवा डिबेट पई तांका अगेंस्ट कोनोसी प्रकार
चार्ज क्रिएट करा जाई परिबो नाही ये आर्टिकल 105 कहूची इन द सेम वे एमएलए मानक मध्ये समान अधिकार मिलछि थ्रू आर्टिकल 194 या व्यतीत डिप्लोमेट यूएन एजेंट एमाने दे एन्जॉय इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग एमान के अगेंस्ट रे क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्रिएट करा जाई परिबो नाही दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 14 आको पढिबे जहा जहा कहले देन इज आर्टिकल 15 कहूची प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यही ग्राउंड रे डिस्क्रिमिनेशन हे परिबो नाही इट मीन्स द स्टेट कैन नॉट प्रोहिबिट ओनली ऑन दिस ग्राउंड यार अर्थ होची द स्टेट कैन प्रोहिबिट but the state cannot prohibit on the ground of religion on the ground of gender caste or place of birth other ground रे state prohibit करि पारिबो बा discriminate state एटी करि पारिबो एकता आर्टिकल 15 कहूची so 15 clause 2 कहूची it provides that there shall be no restriction on any person on any of the above basis to access and use the public place मान को यूज करिया पई जेमति कि बादिंग घाट से गला शॉपिंग मॉल हे गला याको यूज करिया पई लोक मान को भीतर डिस्क्रिमिनेशन करा जाई परिबोनी कोनोसी ग्राउंड रे आइदर रिलीजन रेस कास्ट कोनोसी ग्राउंड रे डिस्क्रिमिनेशन करा जाई परिबो नाही then there are certain exceptions to article 15 as well the first one is that nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children women और children मान को पई किछि special provision formulate करा जाई परिबो नाही then admission to educational institutions including private educational institution so एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान को मध्य तो एडमिशन करा जाउछि से समय रे कोन प्रकार डिस्क्रिमिनेशन हे परिबो नाही रिसेंटली अ न्यू क्लॉज हैज बीन एडेड टू इट दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 6 दैट इज फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सो ईडब्ल्यूएस मान को जो 10% रिजर्वेशन दिया जाउछि ये आर्टिकल 15 क्लॉज 6 अनुसार दिया जाउछि बुझि पारिले So got a question देखिबा which of the following is difference between fundamental rights and rights secured by other provision fundamental right are immune from constitutional amendment यार constitutional amendment हे परिबो नाही true or false first point second point कहूची if the rights follow from other provisions of the constitution the aggrieved person may have his relief by ordinary suit first यदि हम देखिबा constitutional amendment fundamental right रा हे पारिबो so they are not immune from constitutional amendment बर्तन रिसेंटली कहली कि article 15 clause 6 EWS कोटा पे ऐड हेछि त माने amendment हेछि so first option is wrong second option if the rights follow from other provision of the constitution the aggrieved person may have his relief by ordinary suit so जदि other parts रो आसेछि ताले ordinary suit द्वारा ताको aggrieved person जाई परिबो और जदि fundamental right violation हेछि ताले सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट जाई परिबो second option is correct so the correct answer is B. B is the correct answer. So this is all about article 15. So I'm article 12, 13, 14, 15 discuss kala. In the next session, I will discuss more about the fundamental rights and other parts of the Indian Polity and Constitution. So download the Unacademy app. Use this referral code Samrat Live to get 10% discount upon your subscription amount. SAMRAT LIV without any space you can use this referral code next class रे हमें पुणे discuss करियो Indian Polity and Constitution that's all for this that's all for today I'm winding up the session see you in the next class thank you have a good day